नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ द पॉलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्या क्या डिफरेंट जो नेशंस हैं, जैसे लाइक यूएसए हो गया, यूके हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया और इंडिया हो गया। तो हमने जो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो नेशंस थे उनमें किस तरह का संविधान है, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में बात किया था। इवन दिस कॉन्सेप्ट और दिस टॉपिक इज़ इन द जीएस सिलेबस। आपका जो GS2 सिलेबस है, GS2 पेपर है, उस GS2 पेपर में there's a topic known as the comparison of the constitution of the different states, जिसमें हमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करना है विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में वी हैव डन व्हाट कि हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंपेयर किया था। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ यूएसए, आई टोल्ड यू दैट इन द केस ऑफ द यूएसए देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक, supremacy, and in the case of UK there is a parliamentary supremacy. Okay, so ये सारी चीज़ें हमने बात की थे। एंड इन द केस ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ये जो स्मॉल कंट्री होती हैं तो देयर इज़ अ यूनिटरी कॉन्सेप्ट होता है गवर्नमेंट का। ओके, एंड इन द इंडिया में हमारे पास क्या है, देयर इज़ अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो इंडिया में हम फॉर्म करते हैं। क्लियर, क्वासी फेडरल का मैंने मतलब क्या बताया था। फेडरल का मतलब होता है कि देयर इज अ टू ऑर्गन्स, द फर्स्ट वन इज द सेंटर एंड द सेकंड वन इज द स्टेट, ठीक, और उनमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द पावर। बट इन इंडिया, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन इफ देयर इज अ वॉर, इफ देयर इज इमरजेंसी, इफ देयर इज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस तरह का कोई भी चीज़ होता है, ऑन दैट condition we apply the national emergency or the state emergency or what we called as the president rule। ठीक, तो उस टाइम पे जो फेडरल कैरेक्टर होता है इट कन्वर्टेड इनटू द यूनिटरी वन। ठीक, सो हेंस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द बेसिक द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम द फेडरल टू द क्वासी फेडरल और फ्रॉम द फेडरल टू द यूनिटरी। क्योंकि फेडरल से यूनिटरी चेंज हो जाता है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज द क्वासी फेडरल। सिर्फ फेडरल नहीं है, इट इज़ क्वासी फेडरल, मीन्स हाफ फेडरल यू कैन से। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो हम बात करेंगे रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भारत का जो संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, मैंने बताया था आपको कि देयर वाज अ टर्म नोन एज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, बिकॉज वी वांट टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, वी वांट टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम अपना संविधान बनाना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। सो क्योंकि हमें बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन, सो किस लिए बनाना है या किस पॉइंट को उसमें इंक्लूड करना है, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव of the formation of the constitution was mentioned in the objective resolution that was presented by Jawaharlal Nehru on the 13th of December 1946. Now afterwards this objective resolution converted into the preamble, और जब सारा का संविधान पूरा बन गया था, when the whole constitution was formed, this preamble was added in the constitution। ठीक, so this you should know from here। and I also told you कि that there was a case known as the Beru-Bari Union case। ठीक है, so this case was for the exchange of enclaves, so the whole name is the Beru-Bari Union case and the exchange of enclaves। इनक्लेव्स मतलब जो जगह है उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस केस वॉज हैपन इन द 1960, और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हेयर वी आर एक्सचेंजिंग सम क्लेव्स विद द बांग्लादेश। एंड इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द preamble is not the पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। preamble जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट इन द गोलकनाथ केस एंड वेरियस रिस्पेक्टिव केस, बाकी जो आगे केस आए, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड yes, preamble is also the part of the constitution। Why? Because
जस्ट लाइक ऑल द रेस्ट पार्ट, बाकी पार्टों की तरह ही प्रियम्बल इज ऑल्सो वोटेड अपॉन in the constituent assembly, so hence the preamble is also the part of the constitution. ठीक, now अब बात करते हैं what are the objective of the constitution. हमने जो संविधान बनाया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, why we have made the constitution. So for that you should know that कि अगर हम बात करें the objective of the constitution, संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है या जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं. द फर्स्ट वन विल टॉक अबाउट द जस्टिस. वी वांट टू गिव द जस्टिस टू द पीपल. नाउ द आइडिया ऑफ द जस्टिस, इट इज बोरोड फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशन. ओके, सो द आइडिया ऑफ द जस्टिस, इट वॉज बोरोड फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशन. ओके, और अर्लियर इट वॉज द USSR, Soviet Union. Okay, Soviet Union. Now the justice could be of the many types. हमने संविधान में जस्टिस की कई सारे क्राइटेरिया बनाए हुए हैं या कई फॉर्म में उसको डिवाइड किया हुआ है. स्पेशली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द जस्टिस वी टॉक अबाउट इट हियर. द फर्स्ट वन इज द सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस. नाउ व्हाट इज द सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस क्या मतलब होता है? ठीक, सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि वी नीड टू मेंटेन अ सोशल बैलेंस. क्या मेंटेन करके रखना है हमें? सोशल बैलेंस. सोशल बैलेंस मेंटेन करने से क्या होगा? देयर विल बी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द सिटीजन्स. विद दैट क्या होगा? इफ देयर इज अ सोशल बैलेंस, सो वी कुड मेंटेन द इक्वल ट्रीटमेंट और वी कुड प्रोवाइड द equal treatment for all the citizens in the country. Clear? And for that we have the case known as the Dalmia Cement Limited versus Union of India case of the 1996. Now in this case the Supreme Court said that the social justice that is mentioned in the preamble of Indian Constitution, it talks about the removal of the social imbalance. Social imbalance. So if there is any social imbalance, we have to remove that social imbalance in order to provide the social justice. This was said by the Supreme Court in the case of the Dalmia Cement Limited versus Union of India 1996. And if we are in a position to remove the social imbalance so that all the people in this country, regardless of their caste and religions, live in a harmony. Okay, तो वो क्या है? regardless of their caste और religion, वो एक साथ रहें. तो यानी कि we want to provide the equal treatment. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? we want to provide the equal treatment to all for that. Clear? Now the second is, this is the first. The second we will talk about, it is the second is the political justice. Political justice. Now what is the political justice? Political justice का मतलब होता है कि we are providing the political soft power to everyone, irrespective of whether he is young or whether he is old, whether he is literate or whether he is illiterate, whether he is women or whether he is men, whether he is educated or whether he is uneducated. Clear? So whether he is Brahmin, you can say, or whether he is Dalit, हम सबको क्या प्रोवाइड करेंगे? पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल जस्टिस कुड बी द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और यू कैन कॉल इट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. Now what is it? Universal adult suffrage
और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और कॉमन सफरेज, इसको हम लोग बोलते हैं द राइट टू वोट. दिस इज आवर राइट टू वोट दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 326. Okay, so this is our right to vote. Right to vote. Now, in this right to vote, we are providing a right to cast vote, the right to cast vote to everyone, whether he is young, old, whether he is literate, illiterate, whether he is women, men, whether he is educated, uneducated, Brahmin, Dalit, doesn't matter. We are providing the right to each and everyone. Clear? So this is the political justice. इसमें rich और poor का कोई भी concept नहीं है. Getting my point? So this is the meaning of the political justice which is provided by the Indian Constitution. Clear? And for example, one more concept if you want to understand, there was also a case known as the Lily Thomas case. Okay, versus यूनियन ऑफ इंडिया 2013. इस केस में क्या हुआ था? इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट क्वैश क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था सेक्शन 8(4) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. सो आरपी एक्ट 1951 का जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है उसको क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था, नल एंड वॉइड कर दिया था. नाउ व्हाट दिस सेक्शन 8 क्लॉज 4 मीन्स, इफ समबडी इज कन्विक्टेड और एज द क्रिमिनल और द लॉ ब्रेकर हैज़ बीन डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा. दिस वॉज द सेम केस ऑफ द राहुल गांधी. ओके, सो दिस वॉज द सेम केस ऑफ द राहुल गांधी. राहुल गांधी को क्या हुआ कि उन्हें 2 साल की जैसे सज़ा मिली, तो उसके बाद क्या हुआ कि अंडर दिस क्लॉज, अंडर द जजमेंट एज गिवन इन द ली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, इफ any person got, or any MP, member of parliament, or any MLA, he got the conviction of 2 years, he will be disqualified to contest election for more than for additional 6 years. यानी कि टोटल 8 साल जो होगा वो ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन. ठीक है, और ये जो चीज़ की गई है, ठीक है, दिस इज क्या? दिस इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ द पॉलिटिकल जस्टिस टू एवरीवन. ओके, ठीक. सो दिस इज सम डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल जस्टिस. नाउ द नेक्स्ट थर्ड वी टॉक अबाउट the economic justice. Now please pay attention here. I told you earlier also, just like we have the fundamental right in the part 3, we have the DPSP in the part 4, we have the fundamental duties in the part 4A. Now the aim of the fundamental right is to provide the political justice, as we have discussed earlier. Okay, and the aim of the DPSP is to provide the social plus economical justice. Okay, so this you should know. ठीक है, the fundamental right is the aim of the fundamental right is to provide political justice, and the DPSP, the aim of them is to provide the social or the economical justice. ठीक है, so this you should know from now. अब बात करते हैं the इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में. ठीक है, तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है कि टू प्रोवाइड जस्टिस इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी. To provide justice in terms of the economy. Now, what this means? This means that the idea of the economic justice is to make the equality of the status meaningful and life worth living. That is the elimination of the inequality in terms of the wealth, income and property. तो हमें क्या करना है? We want or we
try to eliminate the inequality in terms of the wealth, income and property. Means we are trying to avoid the accumulation of wealth. Okay, हम नहीं चाहते हैं कि देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, तो इस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय द DPSP. ठीक, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द DPSP. नाउ सो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द जस्टिस. सो जस्टिस में हमने बात किया दैट द जस्टिस विच इज टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन और USSR, earlier known as the Soviet Union. The justice could be is of three types. The social justice means the equal treatment of all, and in the Dalmia Cement versus Union of India case 1996, Supreme Court also said that we need to remove the social imbalance, ठीक, so that people could live in harmony or irrespective of their caste and religion. The next is the political justice, is provided by the fundamental rights. ठीक, the example I have given of the universal adult suffrage and the Lily Thomas versus Union of India case of 2013, where the Supreme Court null and void the section 8(4) of the Representation of People Act of 1951. The next, what we have talked about, the economic justice. Economic justice means to remove the accumulation of wealth, or to prohibit, to avoid the accumulation of wealth and distribute the income in all the people equally, or try to distribute in terms of the wealth, income and property. Now the next thing what we are talking about is the liberty. Liberty. Now what is the meaning of liberty? Liberty means you have the right to some sort of freedom. Liberty means it is some sort of freedom. It is some sort of freedom. Clear? Now, freedom of what? The freedom of thought, the freedom of expression, the freedom of belief, the freedom of faith, and the freedom of worship. Now these are the five types of freedom that are mentioned in the Constitution. So liberty means you have the liberty, means you have the freedom. You have the freedom of thought, means you can think anything, whatever you like. You have the freedom of expression. You can express whatever you feels like at a particular time via speaking, via social media handles, via any written print media. The freedom of belief, you can believe in any religion. Just like you have the Article 25 to 28, the freedom of religion, where you can have faith in any religion, or in you conscience allow, मतलब आपका जो conscience कहीं भी allow करता है, you can have freedom of that. The next one is the freedom of faith. You can have faith in anything, whatever you feels like is good for you. You can worship anything. So these are all the liberty which is provided by the Constitution to you. The next is the equality. Now what is equality? Equality means there is an absence of the special privilege to any section of the society. Means किसी भी एक section of the society को कोई एक special privilege जो है वो नहीं मिला हुआ है. ठीक, there is no special privilege provided to any particular section of the society. So this is equality, and even we have the Article 14 which talks about the right to equality. Okay, this talks about the right to equality. Now the next is the fraternity. Now what is fraternity? Fraternity means a feeling that we all are the children of the same soil, okay, or the same motherland, as we say in Hindi that भारत हमारी माता है. ठीक है, so it is the feeling, ये क्या है, it is sort of feeling that we all are the children of same soil or same motherland. Okay, so this is what the meaning of the fraternity is. ठीक, now in Constitution, as you're going to see, there's a
term known as the dignity of the individual. Dignity of an individual. Now let me show you the constitution first. Now this is the original constitution. ठीक है, the copy of the original constitution. Now in this constitution there is clearly mention of the fraternity, and it is written that the fraternity is assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. Now you can see here this phrase unity and integrity of the nation. This was added by the 42nd Constitutional Amendment Act. ठीक, so this was added by the 42nd Amendment Act of the 1976 that we called as the mini constitution also. Okay, now fraternity means assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Now there are two terms. The first is dignity of the individual and the second is the unity and integrity of the nation. Now in the both of the term, जो ज़्यादा important है, it is the dignity of the individual, because if you cannot maintain the dignity of the individual, it is hard to achieve the unity and integrity of the nation. Okay, so the first thing is the dignity of the individual is so much of importance. Clear? Now moving on the topic, अगर बात करूँ मैं द dignity of an individual, ये क्या है? A fraternity cannot however be installed unless the dignity of each of its member is maintained. ठीक, से यहाँ पे बात किया ना fraternity. So fraternity cannot be achieved unless the dignity of each of its member is maintained. जब तक आप उस ग्रुप के सारे मेंबर्स की डिग्निटी का ख्याल नहीं रखते, या इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द डिग्निटी और इफ़ यू आर नॉट taking care of the dignity of each member of the group, it is hard to achieve the fraternity. It is hard to achieve the unity and integrity of the nation. And in Hindi, the dignity we called it as the garima. Clear? So this is the objective of the Constitution of India. कौन कौन से objective के बारे में हमने बात किया? We have talked about the, in case of the objective, ठीक, we have talked about the justice. We have talked about the, in the justice we have seen the social justice, political justice and economical justice. The second, we have talked about the liberty. The third, we have talked about the equality. Fourth, we have talked about the fraternity. Clear? So these are the four objectives of the Constitution of India which is provided. Clear? अब हम बात करेंगे if we want to break this constitution or if we want to break the parts of the constitution so that we could understand it better. ठीक, तो हम इसके 4 फैक्टर को क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला जैसे बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स it tells about the source of the constitution. So the source of this constitution is we the people of India. ये हमने दिया हुआ है. ठीक है, जैसे मैंने बताया था, जन के द्वारा जन के लिए जनता का राज है. गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. सो वी द पीपल मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिया हुआ है. सो द सोर्स इज अस. कोई फॉरेन पावर नहीं आई जिसने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय अस टू आवर सेल्फ. क्लियर? द सेकेंड इज have solemnly resolved to constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ठीक, तो ये क्या है? This thing is telling about the nature of states. Nature of states, यानी कि जो हमारी states होंगी, ठीक है, तो उसका नेचर क्या होगा. ठीक है, नेचर ऑफ स्टेट. यहाँ पर स्टेट का मतलब नेशन से है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज. ठीक है, और स्टेट की जो डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ द state, it is given in the
आर्टिकल 12, ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे हम। क्लियर? सो द फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज द सोर्स कि कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है। एंड सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दिस इज टेलिंग द नेचर ऑफ स्टेट्स, nature of state. The next thing, it talks about the justice, equality, liberty and fraternity. These 4 things. ये क्या है? As we have just discussed, these are the objective of constitution. कि संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide the justice to the people. Justice of social justice, economical justice, political justice. To provide the liberty of thought, expressions, belief, faith, worship. Equality in terms of the status, opportunities, ठीक, and promote all among them. The fraternity, assuring the, first I told you, the dignity of the individual. The dignity of the individual is superior to the unity and integrity of the nation. The first, we need to provide the dignity to all the members of a community. Only then we can install the fraternity. Otherwise it is hard to install the fraternity if each member is not dignified. Clear? And the fourth thing is that we have adopted this constitution on the 26th of November 1949. So this is the fourth thing, means the date of adoption. Clear? तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने इस पूरे इंसिडेंट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया. द फर्स्ट वन इज द सोर्स, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया. द सेकंड इज द नेचर ऑफ द स्टेट्स. The states are sovereign, secular, socialist, democratic and republic. The third is the objective of the Indian constitution, that is to provide the justice, liberty, equality and fraternity. And the fourth is the date of adoption. Clear? So these are the 4 parts in which we have classified the constitution of India. Clear? Now as I told you about that, on 26th of November 1949 हमने क्या किया? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. बट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स ऑन द 26th of January 1950 बिकॉज दिस डेट वॉज अर्लियर मैंशनड. ठीक है, इसको प्रेफर किया गया था. ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर वेट किया एंड वी हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स इन दी 26th of January 1950. तो इस टाइम तक क्या हो रहा था? इस टाइम तक क्या कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे? नो, देयर वाज सम पार्ट ऑल्सो दैट वाज इम्प्लीमेंटेड और दैट वाज वर्किंग फ्रॉम द स्टेट, दैट इज द फ्रॉम द 26th of November 1949. जस्ट लाइक दी सिटीजनशिप. ठीक, द सिटीजनशिप पार्ट that which is mentioned from 5 to 11, it came in force on the 26th of November 1949 itself, or the government began to work from the 26th of November 1945, and the rest part, the whole constitution, it came into the force in the 26th of January 1950. Clear? So this is about the objectives, the basics, or the classification of the Indian Constitution. Clear? Now, so in this video we will discuss till here only. Next video में हम बात करेंगे, we will talk from the article 1. तो ये आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है और उसके बाद सारे आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे एंड फंडामेंटल राइट विल डिस्कस, DPSP और सारी चीज़ धीरे धीरे करके कवर करेंगे. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हुआ है, यू कैन लाइक द सेशन एंड यू कैन जस्ट लेट योर थॉट पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो दैट आई कुड रीड देम एंड आई विल बी ग्लैड टू सी योर कमेंट्स. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप वर्क हार्ड, मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.